Okay, today we revise the chapter 1 because many are new, and afterwards, maybe tomorrow, I have to start new chapter relation and function because chapter 1 is finished. So today I revise each and every topic of the chapter 1, and if you have any doubt, you can ask one by one. I have to give answer. Okay. So when we start set, then first thing is definition of set. Definition of set, that means what is set actually. So you can say set is nothing but a collection of well-defined things. Set को हमने बोला था collection of well-defined things. Collection of well-defined things. Well-defined things, object, whatever you can say. Okay. Well-defined things, well-defined object, or well-defined anything which is well-defined. This is the set. Not only well-defined is set. Collection of well-defined object or well-defined things are set. फिर हमने इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था आपको. What is representation? How to represent the set? So in representation of set, as I told you, A, capital B, capital C. By these letters, A will represent the set. Like A, suppose this is any set. B, okay. So these are this is the representation of set. How to represent? Now, type of representation. कैसे represent करेंगे? So there are two types of representation. First one is roster form or tabular form. Roster form or tabular form. And the second one is set builder form. Set builder form. Okay, set builder form. So in roster form, what we can do, in roster form simply we write we uh, list the elements separated by commas. We list the element in braces and separated by commas like A is equals to A, E, I, O. ब्रैकेट में बंद कर दिया, सारे एलिमेंट को लिस्ट कर दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया. सपोज ए बी इज द सेट 2 4 6 8 10. So this is the tabular or roster form. This representation is known as roster form or tabular or tabular form. Okay. And afterwards we see the set builder form. The same set if you write in set builder form, you can write x such that x is vowels of English alphabet. English alphabet. Vowels of English alphabet, or you can write B as this x such that x. ऐसे भी लिखा जाता है x such that x is even natural number less than or equal to 10. Less than or equal to 10. Less than or equal to 10. So this is the set representation, especially tabular form or roster form, and how to represent the elements. फिर इसमें हमने आपको बताया होगा जैसे A, E, I, O, U. These are the elements of set. Okay, elements of set. So suppose A ऐसे स्पेस दिया रहेगा A, so belongs to, this means
A belongs to A. ओके, एक्सरसाइज में होगा आपके, अगर B पूछता B belongs to A, so B does not belongs to A. ओके, एक साइन belongs to का है, एक does not belongs to. ठीक है बेटा. So now after representation of set, we shall go to learn about the next topic, what? Null set or empty set. Okay, topic is null set or empty set. Then null set or empty set. Okay, a set having no element is defined as the null set or empty set. और हमने आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था, null set और empty set कैसे दिखाते हैं. So this is represented by phi and this is nothing but this. In both there is some difference. या तो इसको phi से दिखाते हैं या खाली ब्रैकेट रखते हैं. So this is empty set and set having no element is defined as empty set. Suppose for example अगर आपसे कोई पूछे, for example, okay, so you can write A. Suppose you can write X such that X is number of boys in a class, number of boys in a class 11. Okay, is number of boys in a class 11. So you can say a thing which is not possible, like 11 in class 11 in a girls college, Okay, so is that possible? कोई एलिमेंट आएगा इसमें? No element is there. Why? गर्ल्स कॉलेज में बॉयज नहीं होंगे. ओके, तो आया समझ में बेटा? सो दिस इज एम्प्टी सेट. Class 11, presently studying in a school, or you can say any other example. Okay, for the null set or void set, कुछ भी दे सकते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अभी पॉसिबल नहीं कि इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कभी नेचुरल नंबर आएगी. ओके, सो दीज आर द एम्प्टी सेट. And afterwards we see finite and infinite set. A set having countable number of element. That means we had to count the number of element, and the particular set is known as finite set, otherwise infinite. Okay. फिर हम आए थे इक्वल सेट में और आपको बताया था कि A and B are two sets. They are said to be equal if each element of A is also an element of B and each element of B is also an element of A. Then only they are said to be equal. बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उसमें का आपस में हर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल. For example, let A and B are two sets, then they are said to be equal only if each element of A is also an element of B and each element of B is also an element of A. Okay. And after equal set, there is exercise, and then after subsets. क्या होता है subsets? Okay. Let A and B are two sets. Let A and B are two sets, then A is said to be subset of B if each element of A
and B are two sets. Then A is said to be subset of B. Each element of X is also A subset of B if each element of X and A is also an element of B. Okay, X belongs to A. This implies that X belongs to B, and this means A is subset of B. Clear? So you can say A is subset of B if each element of A is also an element of B, and B is subset of A if each element of B is also an element of A. और अगर ऐसा है तो दो सेट इक्वल कब होंगे? जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का. दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, टू सेट्स ए इज इक्वल्स टू बी, इफ एंड ओनली A is subset of B and B is subset of B. And A is subset of B, then B is what? B is superset of A. Superset of A. Okay? A is subset of B, then B is superset of A. और क्या था बेटा? The subset most important. Okay? Number of subsets. So first of all, suppose A is equals to 1, 2. Then subsets of A are 1, 2, 1, 2, and 5. A set having two elements, the number of subset 1, 2, 3, and 4. Similarly, if a set having three elements, then the number of subset is to the power 3, that means 8. Yani, if a set, otherwise, number of subsets of a set containing n elements is to the power n, and number of proper subset of a set containing n element is to the power n minus 1. एक घट जाता है क्योंकि हम लोग फाइव को प्रॉपर सबसेट नहीं मानते हैं. ओके, सो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? टू द पावर n माइनस 1. अभी कोई बच्चा पूछ रहा था बेटा हमसे पावर सेट के बारे में. सर हमसे पावर सेट क्या होता है? तो अगर आपको सबसेट समझ में आया है तो पावर सेट बहुत इजीली समझ में आएगा. ओके, सो पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द subsets of a set A is known as power set and it is denoted by PA. अगर A कोई सेट है, सपोज 1, 2 इसमें एलिमेंट है, तो PA क्या है? पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ A. और ये क्या होता है? इस सेट ऑफ ऑल द सबसेट. तो इसके सभी सबसेट क्या है? 1, 2, 1, 2 and 5. This is the power set of. अगर यही A में 1, 2, 3 होता तो A के जितने सबसेट होते उसका एक सेट बना दें हम, तो उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं. दैट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट A is defined as the power set. Okay, so जो बहुत फेमस है, सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ P5.
P5 की वैल्यू क्या होगी? 5 is always our empty set. So P5 is what? 5. देखिए अब इस सेट में आ गया है ना? Clear? 5 has 0 elements, so number of subset of 5 to the power 0. This is only 5. Okay? So P5 is 5. अगर हम P और P5 की बात करें तो इसको भी आप निकाल सकते हो. This is nothing but 5. भाई इसके दो ही सबसेट होंगे ना, either this or 5. Okay, so this is nothing but to the power 1. Sir. So exercise 3, question number 4, which we asked, x such that x is the circle in the plane, and the next set is x such that x is a circle in a plane with radius 1 unit. So obvious first set is not subset of the second set, but second set is maybe subset of first set. Okay, any other doubt? No, sir. Okay, so tomorrow we will start new chapter, relation and function. Okay, so whatever doubt, please clear today, or maybe tomorrow you can ask on problems based on mathematical. Okay, mathematical problem on union and intersection. You can ask the question, otherwise you can start next chapter. Okay, so कोई डाउट है बेटा इसमें अभी भी? No doubts? Sir, please explain the example 11. Yes, example 11. So please see example number 11. Which example number 11? First chapter, na? Okay, first chapter, example number 11. I'm just going to see example number 11. So page number 10. Page number 10, example number 11. Okay, very good. Who can ask? Who is asking this question? Sir, Riado. My name is Riado. Okay, very good. Example number 11. Yes, let A, B, and C are three sets. If A belongs to B and B is subset of C, is it true that A is subset of C? If not, give an example. Okay, so here it is given, answer is no, because he has taken a set A1, B as a set with in which A belongs to B. A belongs to B का मतलब समझते हैं बेटा, अगर हम दो सेट लिखें A and B, A belongs to B, this means A का कोई ना कोई, यानी A का एक पूरा ये सेट B में होना चाहिए. इसीलिए वहां पे एक सेट A कंसीडर किया है 1, तो B को ऐसा लिया है जिसमें A कंटेन हो. A is supposed to be 1, then B must be any element you can take 1. अब इसके बाद आप 3 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. From here it is clear A belongs to B. ये क्लियर है कि नहीं? A belongs to B. Okay, and also B is subset of C. तो C को हमको ऐसा लेना चाहिए, ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि B जो है C का सबसेट आ जाए. तो जाहिर सी बात है उसका सुपर सेट लेंगे, तो 1, 2 तो होगा ही होगा. यहाँ एक और एलिमेंट 3 भी हम बढ़ा लें. So C is nothing but 1, 2, 3. Here you see A belongs to B, A is equal to 1 and B is subset of C,
but A does not subset of C. क्या A C का सबसेट है बेटा? कंफ्यूज मत होना। A C का सबसेट हो इसके लिए जरूरी है कि A को ये होना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसी का डिफरेंस है। अगर A ब्रैकेट फिर ब्रैकेट में 1 होता तब C का सबसेट होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यही कंफ्यूजन रहा होगा हमें लगता है। जहां तक आपको लग रहा होगा कि A C का सबसेट है, Yes, sir. सिर्फ इसी के नाते ये तो ब्रैकेट 2 नहीं लगा। A का ये एक सेट है ना, और Yes, sir. B के लिए एलिमेंट बन गया। Yes, sir. सबसेट के लिए तो जरूरी फिर 2 ब्रैकेट हो जाता ना, जैसा हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए, दिख रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। और कोई डाउट है बेटा किसी का? ओके, सो